Oui, vas-y. So this is expression Euh, écrite pour TCF, expression écrite, tâche numéro un. Ok? Oui, vas-y. vous avez trouvé un nouveau travail, Nouveau, euh, IAU. nouveau Hmm, travail. hmm, Vous écrivez à votre ami francophone pour lui annoncer la hmm, bonne nouvelle. hmm. Vous décrivez votre poste, vos collèges et Collègue, votre votre collègue, collègue. euh, vos collègues et votre lieu de travail. Lieu, lieu. Lieu, lieu de travail. Hmm, Coucou Emily, hmm, j'ai une excellente nouvelle. hmm, J'ai trouvé un nouveau travail dans une entreprise de télécommunication. Mon hmm, poste est assistant hmm, marketing hmm, et je commence euh, la semaine prochaine. Je hmm, suis très enthousiaste à l'idée hmm. de découvrir ce nouvel euh, environnement. Environnement. environnement Environnement, हाँ, N नहीं, on नहीं, environnement. environnement. हाँ, हाँ, हाँ. Mes collègues sont jeunes, dynamiques et très motivés. Hmm. L- Le bureau est moderne et se trouve près du centre-ville, ce qui est pratique. हाँ, Chaque jour jour. promet, euh, है आ chaque रहेगा. jour, हाँ 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 ये ऐसे लिखे. Chaque jour promet d'être intéressant et enrichissant, Enrichissant. enrichissant, Hmm. sorry, enrichissant. Je Hmm. souhaite que ce poste me permette Hmm. de d'évoluer Hmm. rapidement. J'ai hâte de partager cette expérience avec toi. Expérience. Expérience. Expé- Expérience avec toi. On se parlait, on se Parle. On se parlait, parle. oh, sorry, on se parle bientôt pour que je te raconte tout. Bisous, Marie. Hmm. Très bien. So the word limit, la limite des mots, c'est aussi bon. Hmm. 99. It is very good because we have to write between 60 to 120 more. है ना? Hmm. प्रकाश numéro 1. Yeah. So the ideal limit is 90 to 100 like that. Hmm. So c'est bien écrit. Okay, now we will do the corrections. We will see. Ok, vous avez trouvé un nouveau travail. Vous écrivez à votre ami francophone. So votre ami francophone. It is given here a feminine friend. है ना? Yeah. Pour lui annoncer la bonne nouvelle, vous écrivez votre poste, colleagues, and your place of work. Okay, so you say Coucou Emily, of course, because it is a informal Hmm. message, right? Yeah. J'ai une excellente nouvelle, very good. J'ai trouvé un nouveau travail dans une entreprise de télécommunication. Without S, that is fine. Yeah. Okay, telecommunication company. Oh, okay. Yeah, mon poste est see, you have written Mari here, right? Feminine name. Hmm. So, assistant. Okay. इसीलिए that's why I say if you have to be careful. If you are using a feminine name, right? Hmm. Just take care. Let's say if you हाँ अब जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो je suis. So here je means Marie. Yeah. तो चलो enthusiast is a neutral adjective. I mean, Hmm. it is masculine as well as feminine. Hmm. Let's say anything you use like or by chance आपने Yeah. लिख दिया तो वो Hmm. गलत हो जाएगी Uh, because Marie is feminine, right? yeah. Right. So you have to take care. अगर आप feminine लिख रहे हो so you have to take care of that. Masculine है तो फिर ठीक है. Okay. Okay. Mon poste est assistant marketing.
et je commence la semaine prochaine. Yeah. So you have used present tense here, not Yes. a problem. Il n'y a pas de problème. You Hmm. can use present, you can also use future tense. Je Okay. commencerai. I will Yeah. start because you've said that. Next week I will start. Yeah. Right. So commencerai, A-R-A-I. Hmm. La semaine prochaine, je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir ce nouvel. Very nice. Again, c'est une très bonne phrase. I'm very enthusiastic about, मतलब आप बोलना चाह रहे हो, है ना? Yeah. But instead of just saying de découvrir ce nouvel environnement, you have Hmm. used à l'idée de. Donc, Hmm. c'est une très belle expression. Ok? So, very Thank nice. you. De découvrir, accent aigu. Accent वगैरह नहीं लगाएंगे तो marks कटते हैं. हाँ. Ce nouvel environnement. R-O-N-N-E-M-E-N. Environnement. Mass. मतलब Hmm. ऐसे R-O-N-N-E-N. Yeah. 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 Mes collègues, so very nice, short, crisp beginning. Hmm. Mes collègues sont jeunes, dynamiques et très motivés. Very good. Les adjectifs sont bien utilisés. Le Thank you. bureau est moderne, ok, et se trouve près du centre-ville, ce qui est pratique. Very good. So very nicely elaborated about your workplace that say modern and it is located है ना near to my Yeah. the city and it is and which is practical मतलब say Yeah. pratique. Very good. Chaque jour और Yeah. Yeah. promet d'être intéressant. Again very very nice expression et enrichissant. Very nice expression that each day promises to be है ना promet. Yeah. Instead of just saying chaque jour a, Hmm. आप a भी लिख सकते थे. Yeah. हाँ. But you used chaque jour promet d'être intéressant et very nice. मतलब very good. ठीक है. Thank you. Oui, je souhaite que ce poste me permette d'évoluer rapidement. Très bien. Subjonctif, oui, आपने अपने उसके लिए लिखा है. Very nice. So je souhaite que, as discussed already, I told you, Yeah. you also know it. So permettre, Subjunctive. oui, subjonctif. Again, a very good phrase. Une bonne phrase parce que tu as utilisé le subjonctif, tu as utilisé adjectif démonstratif, tu as utilisé pronom direct. Yeah. You have used expression permettre de faire quelque chose. So this thing, it is again very nice and an adverb. It is a very short sentence, very precise and very clear, very nice with mostly all the elements we need in a phrase. J'ai hâte de partager cette expérience avec toi. Again, avoir hâte de faire quelque chose, Hmm. une belle expression. So I'm in a hurry to share this experience with you. On se parle bientôt pour que je te raconte tout. Very nice. Se parler is pronominal verb. Yeah. Again, subjunctive. Pour que is followed by subjunctive. है ना? Subjunctive. Yeah. Wait. So overall, very, very good. Nicely written, short, crisp, with all the expressions. And कुछ ज़्यादा गलतियाँ नहीं है. So if you write like this, definitely you are getting NCLC 7 for at least Tashni Mehro 1. ठीक है, so you have used Thank you. subjunctive very wisely. मतलब it is not that जबरदस्ती भर दिया है. हाँ. Very nice. And you have actually vous avez aussi respecté la consigne. Respecter la consigne, है ना? Like whatever the question is asking you, Yeah. you have done that. Oui, très bien. Thank you. Okay, we do the last one. Yep. Okay, 97 mots. Oui. Ok, vas-y. Invitez un ami à passer une journée avec vous
écrivez-lui un email en lui expliquant lire la date, l'heure, les activités. Hmm. Coucou Emily, j'espère que tout va bien. Tout va bien. Ça fait un moment. Ça fait Un un moment. moment qu'on ne s'est pas vu. Hmm. Je pensais il serait sympa de planifier une journée pour passer du temps ensemble et prendre de nos nouvelles. De nos nouvelles. Non. Hmm. Nos nouvelles. Hmm. Que dirais-tu du euh, euh, Hmm. 20 27 octobre. 27 octobre, 27. Hmm. 27 octobre au Ah. parc du Mont-Royal à Du. du, du Mont-Royal à Montréal. On Montréal. fait euh, Montréal. Montréal, Monré- Hmm. Montréal. On fait une petite randonnée, Hmm. un pique-nique et prendre quelques photos de la nature. Ensuite, on pourrait louer de vélo pour une petite balade dans Hmm. le parc en papotant. Hmm. J'aimerais Photo, que very cette, nice. Hmm. j'aimerais que cette journée soit un moment inoubliable pour nous. Hmm. Dis-moi si tout est disponible. Bisous, Marie. मैम एक स्पेलिंग गलत हो गई गलती कोई बात नहीं. से। वही très bien, ma'am. Okay. So, okay, you have to invite your friend to passer une bonne journée avec. And you have to write an email. Coucou Amélie. अच्छा जैसे क्वेश्चन में if you have given anami, okay, हम्म it is not a problem that you have मतलब आपने एक feminine नाम लिखा है. I mean, हम्म c'est pas grave if you are even, but this is anami masculine, right? या So we still would consider कि आप यहाँ पे कोई masculine नाम लिखो. ठीक है, just be, ओके हाँ, be very attentive while reading the question masculine feminine. ठीक है, क्योंकि they generally give you, right? जैसे या ऊपर लिखा था ना यूनामी, इस वाले में लिखा था ना मुझे क्रीवे बोथ आमी विद मी, या राइट that is why it is a feminine friend. So take care if it is a masculine thing, so address to a masculine friend. ठीक है, ओके so you say Shaku Kupatrik. Okay. J'espère que tu vas bien. Ok, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ok, you can either write ça fait un moment or you can also say ça fait un bail. है ना? बाय Bye. it हाँ, is it is also. synonym of okay हाँ, I mean it's been long we haven't met. okay मतलब जरूरी नहीं है, मोमो भी ठीक है. हाँ अगर आपको कुछ और लिखना है तो you can. ओके ओके Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. But very nice expression. J'ai pensé qu'il serait sympa de planifier une journée pour passer du temps ensemble et prendre de nos very nice. Excellent. थैंक यू Passé composé, I thought that it would be nice de planifier. So, être sympa de faire quelque chose. Une journée pour objective, now you're saying. Passer du temps ensemble et prendre de nos nouvelles. Adjective possessive as well. So very, very good phrase. थैंक Complex यू as well as nicely written. Simple also. कुछ ज़्यादा, see, we don't need to use high-fi vocabulary. Even if या you're using simple vocabulary and but constructing correct phrases, they are important. Okay? So you have used passive composer and conditional in one sentence. It is very nice. थैंक Now, que dirais-tu? Very good again. यू Starting with the question, है ना? A nice thing. You answered October, Montreal. Very good. So what do you think about, है ना? What या about? वो How about
27th October. ये मैम सेम हमने पहले वाले में किया था, तो मैंने हाँ वहीं से ही वोकैबलरी लेकर ये सारा मैंने खुद ही लिखा है, उससे वोकैबलरी हाँ लेकर। हाँ, I know what all you are using. मतलब हाँ हाँ। I know that you have learned few things and you have developed Yeah. this words expression. So हम्म, ये मुझे याद है, मोरोयाला है ना आपने. हाँ So हाँ very good. This is how we have to actually remember few expressions, few things which we can use repeatedly in our right. writing or even speaking. हम्म। Again, future tense. Okay, very good. ओ नहीं, ओ के साथ we have to conjugate इलेल वाला ना. हाँ मैम, ये नू नू फेरो, ये आपने वो, बीच में मैंने हाँ ये करेक्ट करना था, ये पता नहीं कैसे रह गया बीच में। ये मैंने हाँ पढ़ने के टाइम ही देखा। हाँ. सो इधर यू राइट नो, बट क्योंकि आपने ओ यूज किया हुआ है नीचे भी, तो ओ कंसिडर करते हैं. सो यू वांट टू यूज फ्यूचर सैम्पल और, हाँ फ्यूचर, अच्छा आपने ओ एन एस लगाया है, तो नो कर दो फिर इसे. हम्म ये कौन से की जरा जरा जरा, हाँ द नो नोवेल लिखा है ना. ठीक है, सो वी हम्म। कैन डू नो फरो. ओके। हाँ. ओके, सो नो फरो une petite randonnée à पिकनिक, अगर आप एज अ नाउन यूज कर रहे हो, है ना, विदाउट हाँ आर. यार, एंड ये नेक्स्ट लाइन में क्यों चला गया. मैम ये पता नहीं मैम, ये मुझे जब मैंने भेजा तब मैंने देखा कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हो गया, ये मैंने नोट नहीं किया। नो वरीज. सो ए prendront quelques photos de la nature. Very good. Ensuite, okay, connecteur, on pourrait. Now it is fine. Conditional, on louer des vélos pour une petite balade dans le parc. On papote. Very nice. C'est quel verbe? Pap, papoter. गॉसिप। Yes, गॉसिप। papoter. C'est, it is like informal verb, है ना? या Bavarder का synonym. हम्म Papoter, bavarder. Oui, या en papotant. Très bien, gérondif. So very good. You have used gerundif also. So we हम्म advise you to use gerundif, मतलब in your writing. ठीक है? हम्म Tash 1, Tash 2, Tash 3, wherever मतलब you feel like, but use gerundif. J'aimerais que cette journée soit un moment inoubliable pour nous. Very good. Subjonctif. Euh, dis-moi si tu, ठीक तो लिखी है स्पेलिंग, ट्यू के साथ है ना. हाँ ठीक है, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ. हम्म Dis-moi si tu es disponible. Very good. हाँ, tell me if you are available. Very nice. So it is informal email. So very good. Bisous, Marie. Yeah. Very nice. मतलब c'est bien écrit, bien expliqué, toutes les choses, मतलब short, हम्म precise, clear cut with all the elements we need in our French writing. So wait, very good. थैंक यू मैम। These verbs are very good. Planifier, है ना, हम्म papoter. So okay, okay, très bien. So I'll share a few more topics with you, है ना. ओके मैम। So this या way, I think we've almost finalized our task one, but still या we will practice few more for exam point of view, different हम्म things, है ना. या And then we will move to task numero the. जू Wait. Okay.